I hope समस्ते बहुत भले थे and आज हमें पढ़िबा B.Ed third semester book that is learning assessment. So आज हमें पढ़िबा unit 4 रो बहुत सारा topic मु already upload करि सारछि and this is the fourth question, that is reporting student performance, then the content, the formats and the progress report, cumulative records, profiles and open house, using feedback for reporting to different stakeholders like student, parents and administration. Okay, so video start kariba. So reporting student performance and content and format and progress report, then cumulative record, profile, open house, using feedback for reporting to different stakeholders. First आमे जानिबा reporting student performance, content and format and progress report विषय रे. So reporting defined as gathering information on children's progress in school to their parents. Teacher use this information to plan for learning and give report to parents. Reporting is an integral part of effective teaching. Reporting is an integral part of effective teaching. The report card is the legal document. Report card contains marks for each subject and it focuses on students' overall development of learning skill. So reporting कौन? Reporting माने कौन? ना gathering information on children's progress in school to their parents. So पिलारो जो progress हेची, कितने progress हेची, ता विषय जो information को gather करिकी, आमे कौन करू कोटे report card रे लिखू, then parents मान को सेटा दिया जाए. Okay. So teacher इजे information को use करंती ताकि से plan करिवे for learning. और कौन से ये report card टा दे दियंती काहाकू, parents मान को. Then reporting को कुहाई ची कोटे integral part of effective teaching. काहे की कुहाई ची ना इटा कोटे legal document. और कौन इटा content करूची marks for each subject. अपना रिपोर्ट कार्ड तो पाउथिबे ना स्कूल रे जोटा रे आपनकर सब्जेक्ट लिखाई था लेफ्ट साइड रे इंग्लिश, ओडिया, मैथ, साइंस, हिंदी, देन राइट साइड आपनकर मार्क्स था ना आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 50. सो दैट इज रिपोर्ट कार्ड. बुझ पाले रिपोर्ट कार्ड आपनकर लिखाए ना जे A+, A, O ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड से सब थाए. देन आपनकर से जे गोटे बॉक्स से लिखा हुए कीप इट ऑफ और वेरी गुड, एक्सीलेंट. सो पिलारो इनफॉरमेशन ही सेटा ना पिलाटा केते प्रोग्रेस करिछि, केते मार्क रखिछि. सो सेई पे इटा बहुत इंटीग्रल पार्ट. आपण इटा फोकस करे कहा ऊपर ना पिलारो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल ऊपर. किए रिपोर्ट कार्ड फोकस करे पिलारो डेवलपमेंट ऊपर, तार लर्निंग स्किल्स ऊपर. सो रिपोर्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस होची एटा. थ्रू रिपोर्ट कार्ड आमे पिलार परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करि थाउ. ओके, बुझि पाले. फर्स्ट अपन कोन लिखिबे कि रिपोर्टिंग कोन ना गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन चिल्ड्रन प्रोग्रेस. ठीक अछि. देन आपनकर टीचर यूज करते इन्फॉर्मेशन को ताकि से लर्निंग पे प्लान करि परिबे. देन ए रिपोर्ट को से पेरेंट्स मान को दियंती. रिपोर्टिंग गोटे इंटीग्रल पार्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग. देन रिपोर्ट कार्ड गोटे लीगल डॉक्यूमेंट. रिपोर्ट कार्ड रे कोन थाए ना मार्क्स थाए फॉर ईच सब्जेक्ट. अब इटा फोकस करे कहा ऊपर ना पिलारो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल. देन आसुची प्रोग्रेस रिपोर्ट. गोटे गले रिपोर्ट कार्ड, गोटे आसुची एबे प्रोग्रेस रिपोर्ट. प्रोग्रेस रिपोर्ट कोन को एटा भी गोटे रिटन डॉक्यूमेंट. ठीक अछि. सो सेटा जते आपन को मार्क्स थिला तो एटा रे सेमती कोन सी सेम जिंस इट एक्सप्लेन हाउ मच प्रोग्रेस इज मेड बाय स्टूडेंट. ठीक अछि. Then the progress reports are given to students to take home. It is sent home so that parents are informed about children's progress, and progress reports are given to signed by parents and then returned to the class teacher, and it is also focused on students overall learning skill. ठीक अछि. कौन लिखिए फर्स्ट रिपोर्ट कार्ड गोटे कौन ना रिटेन डॉक्यूमेंट. ठीक अच्छे. यह कौन एक्सप्लेन करुची कि पिलाटा केते प्रोग्रेस करची, जस्ट लाइक रिपोर्ट कार्ड. ओके. सो प्रोग्रेस रिपोर्ट पिला मन को दिया गला, से माने घर को नहीं की गले देखि पेरेंट्स माने कौन करले. पेरेंट्स माने इन्फॉर्म हेले ना पिला केमती कौन प्रोग्रेस करिची.
प्रोग्रेस रिपोर्ट दिया जाए कौन पाए ताकि पेरेंट ताकू साइन करेंगे साने बेले मन अच्छे ना छोट बेले आम प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं के आसलु देन आमर बाबा कि मम्मी साइन करुले देन आम नहीं पुणी क्लास टीचर को रिटर्न कर दौलु ना देन इटा कौन फोकस करुची ना पिलार ओवरऑल लर्निंग स्किल उपरे बुझीगले रिपोर्ट कार्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट देन एबे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड वेरी इंटरेस्टिंग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड The cumulative record is a permanent record about the student. बुझपारे it is maintained up to date. It contains all information about student. ठीक अच्छे सो cumulative record गोटे कौन ना गोटे permanent record कहा विषय थाए ना पिला विषय थाए एटा को मेंटेन करा जाए अप टू डेट आ कौन यह कौन कंटेंट करुछि पिला माने ना इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट पिला विषय सब प्रकार इनफॉरमेशन किए मेंटेन करुछि ना क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड अच्छा देखिबा कौन कौन इनफॉरमेशन अछि सो द इनफॉरमेशन इंक्लूड स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस पिलारो एकेडमिक प्रोग्रेस ऊपर अछि मिड टर्म मार्क्स ऊपर अछि फाइनल मार्क्स अछि आ कौन अटेंडेंस ऊपर अछि कौन कौन चारटा जिंस स्टूडेंट एकेडमिक प्रोग्रेस मिड टर्म मार्क्स फाइनल मार्क्स आ कौन अटेंडेंस So cumulative record card are as follows. Cumulative record कौन था? पांचटा जिनस मु कहबी चारटा जिनस मु कहबी सो फर्स्ट होचे कौन ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा नेम ऑफ द पीपल एंड द जेंडर देन डेट ऑफ बर्थ क्लास सेक्शन फादर्स नेम से सब अच्छी देन फिजिकल डाटा कौन तार वेट हाइट से सब एंड देन साइकोलॉजिकल डाटा कौन तार इंटेलिजेंस कौन तार इंटरेस्ट कौन एजुकेशनल डाटा कौन जे तार प्रीवियस स्कूल मार्क केते थिला तार अटेंडेंस केमते थिला से सब आपन को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बुझ पाले क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कौन पिलारो गोटे परमानेंट रिकॉर्ड ठीक अछि जोटा को मेंटेन करा होछ कौन अप टू डेट कंटेंट करछि पिलारो ऑल ओवर इनफॉरमेशन को जमती तारो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाटा फिजिकल डाटा साइकोलॉजिकल डाटा एजुकेशनल डाटा बुझिलो देन आसला प्रोफाइल प्रोफाइल कौन एटा गोटे रिटेन डिस्क्रिप्शन दैट प्रोवाइड इनफॉरमेशन अबाउट समवन और समथिंग सेम जिनसो प्रोफाइल भी सही टाइप रो टिके कि प्रोफाइल गोटे रिटेन डिस्क्रिप्शन